Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 6 Footprints. This is the second part of this chapter. Students, in the part 1, you have learned about the different objects which we have traced it and we get the shape. हमने different object को trace करके अलग अलग shapes मिले थे, right? Footprints को हमने trace किया था तो हमें different footprints दिखे थे. So what that is talk about the shapes now. We will learn about the different shapes. See, shapes are two types, plane shapes and solid shape. Okay, first we will talk about the plane shapes. Plane shape means what? Flat shapes are called the plane shapes. जो flat shape होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Plane shape कहते हैं. So plane shapes in another way what we can write? 2D shapes, two-dimensional shapes. Okay. प्लेन शेप्स का दूसरा नाम क्या है? 2D शेप्स. See, which shape is this? We learned it. This is the triangle, right? Which shape is this? This is a rectangle. This one is square and this one is circle. Okay, so this all are the plane shape. When you take any object and when you trace it, so you will get this kind of shapes. So that is called the plane shapes. Okay. So we have seen that we have taken one bowl and press it out. So we get one side we get the bigger circle, and when we turn out the bowl and we get the smaller circle. Okay. So trace करने पर हमें दो different circles मिले थे, right? So when we trace any object, we get the plane shapes, right? So plane shapes means what? Flat shapes होता है उसे हम क्या कहते हैं? Plane shapes. And another way, that is the 2D shape, two-dimensional shapes. Right students? So you already know this steps. Now let's see next one. Now 2D shapes in real life. यानी 2D shapes के different example दिए गए हैं. See, which shape is this? Square. Here the spelling is also written as Quare, square. So see, this is the window and this is the frame. This both the shape is square. Okay. Now rectangle. Here the given the spelling of rectangle. So you have to learn all the spellings of plane shapes. Okay. RECTANGLE, rectangle. See, these are the example of rectangle. Your school blackboard. Have you seen school blackboard? The blackboard shape is a rectangle, right? And the calculator. आपने देखा है कैलकुलेटर का शेप भी कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है, राइट? ट्राइंगल. This is the spelling of triangle. TRIANGLE, triangle. Have you seen this hanger? आपकी मम्मी उसमें क्लोथ हैंग करते हैं ना, that shape is also triangle. And this is the one of the compass box tool, that is also a triangle shape. Okay. Now another plane shape is a circle. CIRCLE, circle. See, these both are the example of circle shape. See, this is the ball and this is the chapati. Both the shapes is like a circle. When you trace this, you get the circle. Okay students, let's see another example. See, what is this? This is a star. Okay, so these are the starfish. So starfish होती है ना, it's the shapes like a star. Okay, this is an oval. OVAL, oval. Egg shape is like oval. Okay, have you seen this kind of board? That is written on welcome board. Okay, that shape is also like an oval. Now, which shape is this, students? Which shape? Pentagon. Pentagon means, see, उसकी कितनी साइज होती है? 1, 2, 3, 4 and 5. See, these two are the example of pentagon. Understood students? This is the signboard that you can see on the road. आप देख सकते हो जब रोड के पास ऐसा बोर्ड लगाया होता है, उसका शेप कैसा होता है? पेंटागन. नाउ विच शेप इज दिस? दिस इज एन हेक्सागन. हेक्सागन मीन्स व्हाट? हेक्सागन की कितनी साइज होती है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइज होती है, राइट? सी, स्टॉप. स्टॉप का जो साइन बोर्ड होता है उस वो कौन से शेप का होता है? हेक्सागन शेप का होता है. देखो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो लाइक एन हेक्सागन शेप. So whenever you go anywhere, when you see the objects is on shape, so you can identify it very easily, right students? So these all are the example of 2D shape, that is a plane shape. Okay, let's see the another one. Now here the one of the match the following is given. You have to match with the
ऑब्जेक्ट, ये शेप्स है उसको ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. Which shape is this, students? One number, it's a rectangle. So which object is look like rectangle? So we can say this diary is like a rectangle. Okay. Now which shape is this second one? How? Which shape? Pentagon. Okay. So this button is look like a pentagon. Okay. Now circle. Where is circle? The last one is like a circle. Now square. This clock is look like a square. Triangle. This signboard जो है that is look like a triangle shape. And this one is look like an oval. Okay. So यहाँ पे आपको one side पे shapes दिए गए हैं and another side is the objects are given. So you have to just match it with the correct shape. Whenever you get the tracing of this shape, you will get this kind of plane shapes. जैसे कि हम बात कर ले स्क्वायर क्लॉक की. ओके, आप ये क्लॉक रखो एंड यू गेट द ट्रेसिंग. यू डू द ट्रेसिंग ऑफ दिस क्लॉक एंड यू गेट दिस स्क्वायर शेप. दिस साइन बोर्ड आप उसको ट्रेस कर लो, आपको ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा. दिस डायरी को ट्रेस करो, आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा. ठीक है. सो वेन एवर यू टेक द ऑब्जेक्ट, यू ट्रेस इज, यू गेट द प्लेन शेप्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी सम मोर अबाउट द प्लेन शेप्स. नाउ स्टूडेंट्स, प्लेन शेप हैज़ सम प्रॉपर्टीज़. मीन्स प्लेन शेप के बारे में और बात करते हैं. प्लेन शेप्स का क्या होता है? प्लेन शेप्स की साइड्स होती है एंड कॉर्नर्स होती है. कैसे? देखो यहाँ पे ऑल द नेम्स ऑफ रिटन प्लेन शेप्स. सर्कल की बात करते हैं. सर्कल की कितनी साइड्स और कॉर्नर होती है? नो साइड्स नो कॉर्नर. सर्कल कैसा होता है स्टूडेंट्स? सर्कल इज़ लाइक दैट. ओके. सो सर्कल की कोई साइड्स और कॉर्नर नहीं होती है. सो व्हाट हैज़ टू राइट? आपको क्या लिखना है? 0 0. नाउ वी टॉक अबाउट ट्राइंगल. ट्राइंगल की 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होती है. हाउ? आई विल शो यू. सी दिस. फर्स्ट यू विल सी अबाउट द ट्राइंगल, राइट. सो आप ये ट्राइंगल शेप्स है. सो ट्राइंगल की यहाँ पे ये जो 2 लाइन है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज द साइड. दिस इज कॉल्ड द साइड. ये वाला जो है उसे भी क्या कहते हैं? साइड. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द साइड्स. और दिस इज कॉल्ड द कॉर्नर. ये जो है उसे क्या कहते हैं? कॉर्नर. व्हेन 2 साइड्स आर मीट, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर. यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे 2 साइड्स मीट होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्नर. द सेम वे हियर एंड हियर, व्हेन द 2 साइड्स आर मीट, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर. दैट मीन्स ट्राइंगल हैज 1 2 and 3 sides and 1 2 and 3 corners. Okay, so triangle has 3 sides and 3 corners. See, यहाँ पे लिखा है 3 sides and 3 corners. Now square has 4 sides 4 corners. Let's see an example. See, this is a square shape, right? उसकी 4 sides होती है, 1 2 3 and 4. Okay, corners. यहाँ पे 2 sides मीट होती है, वो क्या बन जाती है? कॉर्नर. तो 1 corner 2 corner 3 corner and 4 corner. एंड स्क्वायर की 4 साइड्स 1 2 3 4 and 4 corners होते हैं. राइट स्टूडेंट्स? नाउ rectangle has also 4 sides and 4 corners. How? I will show example. See, this is a rectangle shape, right? उसकी भी 1 2 3 and 4 sides, right? Corner 1 2 3 and 4. कॉर्नर्स मीन्स क्लियर हो गया. जहाँ पे 2 साइड्स मीट होती है वहाँ पे क्या बन जाती है? कॉर्नर. सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. ओके, सी हियर. स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम होता है, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स. नाउ वी टॉक अबाउट द पेंटागन. हमने अभी देखा पेंटागन शेप. सो पेंटागन की कितनी साइड्स होती है? लेट्स सी. दिस इज अ पेंटागन शेप्स. सो 1 2 3 4 and 5 साइड्स. और कॉर्नर कितनी होती है? 1 2 3 4 and 5. राइट. सो पेंटागन हैज़ ऑल्सो 5 साइड्स एंड 5 कॉर्नर. नाउ हेक्सागन. यू ऑलरेडी टॉक अबाउट द हेक्सागन. सी, दिस इज एन हेक्सागन शेप. उसकी कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स? लेट्स सी. 1 2 3 4 5 and 6. और कॉर्नर्स कितनी होती है? 1 2 3 4 5 and 6. And hexagon has 6 sides and 6 corners, and pentagon has 5 sides and
5 sides and 5 corners. किसका होता है? पेंटागन का, राइट? समझ में आया? और हेक्सागन की 6 sides and 6 corner होती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन शेप्स. यानी अगर हम प्लेन शेप्स की बात करेंगे तो उसके साइड्स एंड कॉर्नर्स ही मिलेगी. ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर अबाउट द साइड्स एंड कॉर्नर्स? ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सॉलिड शेप्स. Solid shapes. Solid shape means what? That is called the 3D shapes. Solid shapes का another name क्या है? 3D shapes. Okay? 3D का मतलब होता है means 3 dimensional shapes. 2D means 2 dimensional. Solid shapes means 3D होता है, जिसकी हाइट होती है, विड्थ होती है और डेप्थ होती है. जैसे कि हम बात करें क्यूब. अब आइस का सॉलिड शेप ले लो. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ट्रेस करने पर हमें प्लेन शेप मिलता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक आइस, जिसकी हाइट होती है, विथ यानी थिकनेस होती है और डेप्थ होती है, तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड शेप्स. तो सॉलिड शेप्स कौन कौन से होते हैं? क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूबॉइड एंड कोन. दिस ऑल आर कॉल्ड द सॉलिड शेप्स. समझ में आया? सॉलिड शेप मीन्स 3D shapes. It has a height, width and depth. Okay, so these are the example of solid shapes. So cube का example क्या है? Ice. अगर आपको कोई पूछेगा what is the shape of the ice, so you can't say that is a square. Square is a plane shape, but when we talk about the ice, that is a cube shapes. Okay, when particularly ask plane shape, so you can say square, but just ask what is the shape of ice, you can say cube shape, right? Dice का भी shape क्या होता है? Cube. Now the soup can is given. What is the shape of the soup can? That is a cylinder. Basketball. What is the shape of the basketball? It look like a circle. It's a plane shape, but the solid shape is a sphere, right? Juice box. आप फ्रूटी पीते हो ना, फ्रूटी का जो जूस बॉक्स होता है उसका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड. रेक्टेंगुलर प्रिज्म मीन्स क्यूबॉइड, राइट स्टूडेंट्स? ओके, ट्रेस करने पर हमें रेक्टेंगल जरूर मिलेगा, but actual shape of this box, juice box, is the cuboid. Ice cream cone is a plane shape, is a triangle, but solid shape is a cone. Okay, because उसकी क्या हो जाएगी? हाइट है, विथ है और डेप्थ भी है. ठीक है स्टूडेंट्स? तो सॉलिड शेप्स कितने हैं? 5. क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कॉन. सो दिस स्पेलिंग ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट. ठीक है स्टूडेंट्स? ये आपको लर्न करना है. क्लियर? ओके. So students, I hope you understand about both the shapes, plane shape and solid shapes. Okay, so you learn the properties of the plane shapes also, learn the spellings of plane shapes as well as solid shapes also.